Okay. So, where were we yesterday? Okay. So, क्या शुरू? पिक बनाए थे सर हम लोगों ने. Yeah, pick list बनाए थे and custom MDF object also बनाए थे. We were working for one requirement, right? This is the Right. requirement. Yes. We have Travels created related. Yes. custom object create किए and these two steps हो गया. Okay. We had created custom object from where configure object Definition. travel request था ना अपना. Travel request. So now in manage data, if you see, we can able to get those details. But though we can able to see in manage data, ये है ना, लेकिन though we can able to see in manage data, we have to make it visible in the employee side. Okay, that's the reason we have selected the external code as user. Okay, now from third step it is very important. Step 3, you have to create a screen ID where you have to assign it to the UI. People profile के अंदर एक screen ID assign करते हैं. That screen ID is created in UI configuration. Okay. Screen ID क्यों create करते हैं सर? यानी उसका purpose क्या होता है? Screen ID मतलब through that screen ID only in people profile you are assigning that UI configuration. So वो in order to make it applicable in here in employee file, you have to, it is mandated to create the screen ID. Screen ID will be created in UI configuration. Okay. Okay. So then only people profile में assign कर पाओगे आप. तो people profile में from people profile is you are configuring the view, what exactly the employee should view, but what employee should view, this screen ID the employee should view. Okay, this screen ID we are capturing in UI configuration. Manage configuration UI. इससे पहले भी मैं बता चुका हूं. And you have to create a new in position. If you remember, standard UI already बना था. That is screen ID. Now ID I'm just mentioning with my name, urban travel request, something like this. And then base object I'm selecting travel request. Okay, आ गया ये. अब आपको ट्रैवल रिक्वेस्ट ये पूरा एक ही आया. अगर आपको कुछ एडिट करना है प्रॉपर्टीज में तो यू कैन जस्ट एडिट. अगर इसका कुछ नाम वाम चेंज करना है you can do it over here. For example, let us take let me move this travel start date over here. Travel end date is equal to here. External कोड तो खैर रहने दो सबसे ऊपर ही, इसका वैसे भी यूज नहीं होगा. तो ये दो मैं ऊपर मूव कर दिया. एंड नाउ आई वांट टू ऐड अ ग्रुप. सो ये मैं डिलीट कर दे के यहाँ पे ट्रैवल फॉर्म और ट्रैवल टू बोल दो. यू कैन जस्ट अरेंज हाउ यू वांट द सिस्टम. बेसिकली यूजर टू, इधर मैं एडिट प्रॉपर्टीज में जाके इसका टाइटल में ट्रैवल प्लेस बोल के कर देता हूँ. ओके, फ्रॉम एंड टू. ये मैं ऐसा कर दिया.
समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? Just हाँ I'm सर। redefining this travel place means from and to. इधर मैं इधर का प्रॉपर्टीज एडिट करके डेट लिख दूंगा खाली. ओके, ट्रैवल डेट. जस्ट आई एम कैटेगराइजिंग इट. ओके, ये करके ट्रैवल डेट का एक सेक्शन हो गया, ट्रैवल प्लेस का एक सेक्शन हो गया. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस यूआई. यू कैन जस्ट प्ले विथ इट. अगर आप नोटिस करोगे तो पोजीशन में भी सर्टेन सेक्शंस बने हुए थे. तो जस्ट ऐसा इन दैट पोजीशन ये ऑर्गेनाइजेशन का अलग सेक्शन बना हुआ था, सो दैट यू कैन एबल टू हैंडल इट ओवर हियर in UI configuration. Okay, not only ओके। this, in position also you can handle it. So this is the power of UI configuration. If you want any MDF object to be visible in view which customer wants, means अगर एक MDF ऑब्जेक्ट्स में सर्टेन फील्ड्स दे दिए तो वो लाइन से आ जाएगा. अगर आपको सेग्रीगेट करना है फील्ड वाइज एंड डिस्प्ले करना है UI, बेसिकली दिस इज द थिंग यू हैव टू डू इट. अब मैं ये इधर से मैं एडिट प्रॉपर्टीज करके इसको थोड़ा और लुक दे दूंगा, लाइक आई विल बी टेलिंग इट इन फ्लो और समथिंग लाइक दैट. कुछ हुआ तो नहीं? एक मिनट. और सपोज वो ट्रैवल डेट जो है सर, वो हमें एक्सटर्नल कोड के नीचे और ट्रैवल स्टार्ट डेट के बीच में लाना है। जैसे ये ट्रैवल प्लेस दिया हम लोगों ने, तो वो अगर सपोज नीचे लाना है तो वो भी ला सकते हैं ना? क्या क्या चीज ये? नहीं नहीं, वो ट्रैवल डेट वहां पे जो अभी आपने बनाया सबसे पहले ट्रैवल डेट, वो लेबल, क्या? वो सपोज हमें नीचे लाना है एक्सटर्नल कोड के नीचे। एक्सटर्नल कोड के नीचे हाँ ट्रैवल डेट. नीचे यानी, हाँ ट्रैवल डेट वो हम्म. तो आपको ट्रैवल स्टार्ट, जैसे ट्रैवल प्लेस है ना, ट्रैवल फ्रॉम के पहले है, तो एक्सटर्नल कोड के नीचे और ट्रैवल स्टार्ट डेट के पहले वो ट्रैवल डेट आना चाहिए। एक्सटर्नल ओके कोड, हाँ तो वो ओके. हाँ, वो भी सिर्फ वो कर ड्रैग सकते, डाउन करना है क्या? बट आपको ग्रुप ऐड करके हम्म, ये टाइटल को सबसे पहले मैं ले लिया. ओके. ऐसा हो गया. ऐसा आ रहा है. टाइट टाइट इसको अगर मैं एडिट प्रॉपर्टीज करूंगा तो अगर मैं कोड लिख दिया तो इट इज शोइंग लाइक दिस. ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, ऐसा आ रहा है. ये तो मेन चीज है, तो इसके नीचे आपको सब कैटेगराइज कर सकते हैं आप ऐसा. ओके। ओके, so you can just try it and just I am just saving it. So I have created the UI now, UI configuration. Okay, now step 4 is where that UI should be visible in the employee file. How it is being done, I have told you in previous employee central portlet. अभी तो
सक्सेशन डाटा मॉडल अपना हुआ नहीं, तो पीपल कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल बोल के मैं आपको बता चुका हूँ, वेयर यू कैन एबल टू कंट्रोल द एम्प्लॉय फाइल्स. ओके, हियर कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल this. So next you have to go to people profile. Come down and यहाँ पे आपको अलग सपोज सेक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवल बोल के एक सेक्शन चाहिए अलग से. ओके, सेक्शन मतलब मी, वो 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 सब रहेगा, राइट? रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवल, मी, कॉम्पेंसेशन, दैट इज सेक्शंस. रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवल, if I want to mention this section and either portlet का नाम है, this is MDF object, don't think as portlet, it will be looking like portlet but this is MDF object. So इसका नाम मैं दूंगा again travel request only. Okay, and then I'll be selecting this, just mention live. यहाँ पे मैं आपको ये तो employee profile के है. If you want to show employee profile fields, this is live MDF object. Whenever you want to show the MDF object which is configured backend in the profile of the employee in the employee file, this you have to drag it. Okay, this is the advantage of this live MDF profile. अब यहाँ पे this is the MDF screen ID which we have configured. We have configured with our name, right? Urban travel request इधर आएगा. अब समझ में आया why we have configured that. So there should be certain link that you have to display in the front end. That's the reason I have configured it. Now I'll be saving it. So it is being saved, but again it will not be visible now, because if I go and employee file में जाऊंगा मैं, for example, I will be going to any other employee file like Nandini, whatever the employees. Okay. Last step is what? If I go to Nandini, ये employee file में गया, but I can't able to find the travel request. If I come here, आ रहा ही नहीं वो. So एक step हम miss कर दिए. Last step miss नहीं किए. Last step we have to do. Step 5. What is step 5? I have told sections का नया permission देना जरूरी है. You have created a new section. Permission in employee views. सेक्शन कहाँ पे दिखाएगा? एम्प्लॉय व्यूज में ही दिखाएगा ना? एम्प्लॉय व्यू में दिखाएगा. Yeah, so you have to give this permission. So how you will be giving that permission? You have to go to permission role. Manage permission role, and we are जो आपको रोल में देना है, you have to go in this. We are in system admin training role. Okay. Yes. We all are in system admin training role. सर ये रोल नेम जो है सिस्टम एडमिन ट्रेनिंग, ये चेंज होता रहता है क्या? हाँ, डिपेंड डिपेंड करता है. करेगा. अगर आपको चेंज करना है तो दूसरे दूसरे परमिशंस को कॉपी करके दूसरा नाम भी दे सकते हैं, या you can copy these permissions, and if you want to exclude any permission from this, you can exclude an permission group जो बनाया रहता है ना certain users, you have to include, link it to this. RBPs में बताया था permission groups, what yes. that you can link based on the requirement. You have to create the roles. अगर super admin role बनाना है तो then you have to create for first permission group. What group of people should have that? Either 1 or 2 or 3 or 5. Okay, that group of people you have to mention in group, and either
नीचे आके you have to assign that permission group here. This is the training group till so and so 30th April 2022. Some it is already created. So हम सबका इसमें added है. Okay, like this you Okay. have to link that group basically. So permission roles तो एक ही रहेगा, but you have to link that group. Whatever the permission roles you have to give, you have to decide it here. Okay. Now Okay. the views में जाके what is our section? Section request for travel. हाँ. आ Yes, गया आ गई. travel. Done. Save changes. This is the last step. Now if I just refresh this profile, आ गया? ये लास्ट में आ गई. Yes. Yeah. Travel date same आ गया. हाँ. ये थोड़ा लंबा दिया है शायद स्पेस इसका आई थिंक लेंथ कुछ ज्यादा दिया है या समथिंग. सो नॉट एन इश्यू, यू कैन जस्ट करेक्ट इट, नॉट अ प्रॉब्लम. सो ये effect date, travel end date, ये start date है. This is end date. End date if I want 21st of April, and if I want to upload any attachment, for example, is there any attachment in PDF form? For example, ये लगा दो. Now travel from, I see आ गया pick list. Yes. अगर मैं मुंबई लेता हूँ and मुंबई to पुणे and ये इतने सारे टाइप हुआ है. ओके, ये हम लोग डिवाइड किए थे ना तो ट्रैवल प्लेस. हाँ हाँ. Yes, वो ऊपर लिया था वो. स्टार्ट डेट एंड डेट कोड में ट्रैवल फ्रॉम ट्रैवल स्टार्ट डेट एंड डेट फिर से आ गया. एक्सटर्नल कोड think let me go to UI configuration. Let us take it simple way. Okay, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ऐसा लगाते हैं. Save it and then let me go to the profile. अब आ गया. Yes. वो उसमें कुछ इंटरफेस का वो सेक्शन अपन डिवाइड किए. ये ट्रैवल टू आई थिंक वी हैव नॉट अपडेटेड द लेबल, तो
वो कोड ले लिया है। इफ यू सी कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाके ट्रैवल ट्रैवल 2 था ना वो। हाँ सी लेबल भी वही आ गया, ट्रैवल 2। इसमें चेंज करने से सबसे आसान यूआई में ही चेंज कर देते थे, क्योंकि it will take from the UI. If you change that also, let me just save it, not save it. If you directly change in UI also, it will be fine, because 2 times you have to change again. Label override to travel to लिख दो यहाँ पे, simple. आ गया? यस Effective. Travel from travel to, suppose effective date 19th आज की लगी, travel from I will be saying Pune, travel to I will be saying, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ट्रैवल रिक्वेस्ट हैदराबाद, शायद पिक लिस्ट में प्रॉब्लम हो। कोड हम लोग हैदराबाद दे के ये ट्रैवल रिक्वेस्ट बोल के डाले तो नो प्रॉब्लम, यू कैन करेक्ट इट लेटर। सी इट इज द सेम थिंग नाउ। अब ये दिस इज सेव्ड, ओके। नाउ अगर मुझे दूसरा रिकॉर्ड अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल रिटर्न ट्रैवल अगेन, आई इट डोंट अलाउ मी टू अपडेट इट, मींस हिस्ट्री में जाके इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड बोल के रहेगा, एंड देन आई विल, अगर मैं वो क्लिक भी किया, सो 21st को 21st टू 29th सपोज रिवर्स कर दिया मैं, हैदराबाद टू पुणे एंड सेव कर दिया, देन लेट मी चेक। सो आ गया यहाँ पे पुणे टू हैदराबाद है, यहाँ पे हैदराबाद टू पुणे है, ओके ऐसा है। बट इन केस अगर इधर नीचे ये एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना है, तो हाउ डू यू डू दैट? लेट अस चेक इट दैट सिनेरियो। मैंने भी कभी किया नहीं है, बट यू कैन डू इट। सो फ्रॉम वेयर, जनरली you know the concept of child and parent, right? So from where the object definition is configured, configure MDF object definition, okay? So parent तो हो गया। अब let me create a child object, for example child, effective dating, इधर मैं लिखता हूँ from parent, ओके। तो इसमें परमिशंस की जरूरत नहीं होती है, ये पेरेंट को परमिशन रहे तो बस है। दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। यस डिलीट एंड इधर सिर्फ ऐड बोल के देता हूँ, जस्ट ऐड।
टू डू कैटेगरी जेनरिक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी सेम ही फील्ड्स दूंगा। क्या क्या फील्ड्स हम लोग उसमें यूज किए थे, ट्रैवल रिक्वेस्ट में क्या क्या फील्ड्स थे? इसको इसको क्या करो, कोड की जरूरत नहीं है अभी, ऑटो नंबर करके उसको नॉट विजिबल कर दो, बिकॉज कोड की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, एंड देन ओके विल बी सेइंग लाइक क्या क्या था, ट्रैवल स्टार्ट डेट था, सो ट्रैवल फ्रॉम एंड ट्रैवल टू इधर से लिख लेंगे, ये ट्रैवल फ्रॉम लिख लेंगे, स्ट्रिंग ही रहने दो, एंड आई विल बी मेंशनिंग हियर पिक लिस्ट का हम लोग कुछ वैल्यू किए थे ना, आई विल बी मेंशनिंग पिक लिस्ट का क्या क्या था, पिक लिस्ट का आइडिया अपना, हाउ टू चेक दैट पिक लिस्ट सेंटर। यस। ट्रैवल लिस्ट अर्पण ये है ना, गया यहाँ पे फिर ये डाल दिया, एंड देन लेबल का नाम लिख दो कि ट्रैवल फ्रॉम। ओके, ओके ट्रैवल फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे ट्रैवल टू। ओके, सेम लिख दो 28, यहाँ पे पिक लिस्ट, पिक लिस्ट का वैल्यू एंड लेबल चेंज कर दो, दैट्स इट, ट्रैवल टू। दैट्स इट। और नेक्स्ट फील्ड क्या थी? ट्रैवल स्टार्टेड, ट्रैवल एंडेड, राइट? Date. Code should not have any spaces. Date का क्या रहेगा? Data type date, okay? डेट Yes, and label change कर दो, travel start स्टार्ट डेट date. Then next is what? Travel end date. एंड डेट End date. और चाहे तो आप अटैचमेंट भी ऐड कर दे सकते हैं, ओके? Okay, now security will be no only because we are doing parent object, it is linked with parent. Now I'm just saving. Yes. Now कहाँ पे है हमारा, ये इसका नाम ऐड है ना, तो हमारा हमारा मेन ऑब्जेक्ट कहाँ है? ट्रैवल रिक्वेस्ट, ओके? सो ट्रैवल रिक्वेस्ट में आप एडिट करके
एसोसिएशंस यहाँ पे दोगे, ऐड लिख दो, जस्ट नेम, वन टू मैनी कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे ऐड, ओके, या जस्ट मेंशनिंग कॉम्पोजिट एंड लेबल में ऐड मेंशन कर दो। समझ में आया मैं क्या क्या कर रहा हूँ? हाँ। दैट्स इट, सेव इट। अब दो जगह चेंजेस करना है, अभी आप जाके देखोगे इट इज नॉट, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। सो एक तो इधर इधर करके स्क्रीन आईडी में जाना है, स्क्रीन आईडी में कैसा जाते हैं, यूआई कॉन्फ़िगरेशन, यूआई, ओके, स्क्रीन आईडी में गए और just delete this, okay, and then create new uh, new। अब यहाँ पे जाएंगे, दिखा यूआई का शेप, हाँ सर। ये आ गया, और देन don't need to do anything, just save it, and then people profile में जाके people profile में जाके कम डाउन, दो चीजों में चेंजेस रहेगा, स्क्रीन आईडी और पीपल प्रोफाइल, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे आके अर्पण ट्रैवल न्यू आ गया, सेव इट। अब चेक करना जाके, एक मिनट, आ गया। यहाँ पे अगर आप, ये बटन आ गया, ऐड, जितना चाहे जितना हाँ। मर्जी चाहे यस। आप ऐड कर सकते हो, ऐड करके इधर से इधर इधर ही सेव करते हो। सो लाइकवाइज यू कैन एबल टू मेंशन दिस, ओके। अगर इधर ही ओके। आपको एक बटन चाहिए और एक एक रिक्वेस्ट आपको ऐड करना है, rather than आप गोइंग हियर एंड इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, सो उसके लिए आपको वो चाहिए बेसिकली। ऐसा करके अगर मैं इधर से करूंगा, इन द सेम पेज आई वांट टू ऐड इट, रिटर्न रिटर्न रिक्वेस्ट भी ऐड करना है, देन आई विल बी मेकिंग माय रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर ओनली, ओके। सो वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको ये यूज किया जाता है, ओके। गॉट इट, एनी ओके। डाउट्स? सर सपोज ये जो ऐड बटन दिया है यहाँ पे ट्रैवल हम्म रिक्वेस्ट में, हम्म अभी आप आपका कर्सर है उस पे नीचे, हम्म हम्म ऐड पे, हाँ। तो वहाँ पे ही नीचे अभी हम लोगों ने जो फील्ड बनाए सेक्शंस एंड हाँ हाँ फील्ड, वो अगर यहाँ पे चाहिए फ्रंट पेज पे, तो फ्रंट पेज पे मतलब? फ्रंट पेज पे मतलब ये अभी ट्रैवल रिक्वेस्ट दिखा रहा है ना, तो ये क्लोज कीजिए ना सर। हाँ। ये अभी ट्रैवल रिक्वेस्ट दिखा रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे ऐड करके अब हम लोगों ने किया, तो ये यहाँ पे नो डेटा आ रहा है, तो वो जो हम्म, डेटा अभी हम लोगों ने क्लिक करके वो जो आ रहा है ना, वो सपोज हम्म। ये पेज पे ही आना चाहिए, तो कैसे करेंगे? ये पेज पे तो नहीं आएगा आपको, ये बटन क्लिक एडिट में ही करके जाना पड़ेगा क्या? दिखाओ, एडिट करे हो तो ये आपको अलाउ करेगा ना एडिट करने को। यहाँ पे तो ओके। आप नहीं आएगा, जैसा कि आप पर्सनल एम्प्लॉय के डिटेल्स, अगर आप जब तक मी में
एडिट करोगे यहाँ से तो एडिट नहीं होगा, एडिट करे तो ही होगा ना, तो जो भी एडिट करोगे तो हाँ, ओके आप ओके यहाँ पे ही होगा एडिट आपको ये बॉक्स में, तो वो फिजिबिलिटी नहीं है ओके ओके ओके। ओके So ऐसा आपको, this is how you can able to configure the MDF object and make it as a portlet in our section basically over here request for travel। अगर आपको अलग से ये पोर्टलेट देना भी नहीं है, मीन्स मी सेक्शन में ही आपको इंक्लूड करना है, जैसा ये अलग से सेक्शन है मी सेक्शन में इंक्लूड करना है, तो आपको ट्रैवल रिक्वेस्ट को ऊपर ऊपर मूव करके मूव भी कर सकते, फॉर एग्जांपल पर्सनल इंफॉर्मेशन के नीचे चाहिए मुझे, ओके, तो आई विल बी मूविंग इट। ओके, हियर आईडी इंफॉर्मेशन से पहले चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मूव करके सेव कर देता हूँ, तब वो सेक्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके। अब मैं जैसे कि एम्प्लॉय फाइल को, वो सेक्शन विजिबल होगा सर अभी इंडिविजुअली उधर? विजिबल होगा, नहीं देखें बिकॉज उसके नहीं अंदर होगा वो, अभी हम लोगों ने वो नहीं हाँ होगा, ऊपर लिया। क्योंकि कुछ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, else you can able to see it over here, ओके। अगर आपको ओके। अलग से सेक्शन बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे करना है, then you can able to see it over here, got it। गॉट So इट this सर। is how the MDF you can able to make it visible in an employee file। और नेक्स्ट क्लास से एक्चुअली कल क्लास नहीं रहेगी बिकॉज टुमारो इज माय बर्थडे, सो ओके सर, इन एडवांस हैप्पी बर्थडे सर। thank you so much, so we'll be meeting day after tomorrow with a new ओके topic, फाइन सर। separation data model। ओके फाइन, चलेगा सर। ओके ओके चलो, हैव नाइस इवनिंग सर। थैंक यू।